रूपा हिसाब करो का होईल चलो केतला भाई हला ओ चाचा केते आज्ञा माइनस ये कौन आंसर कहीं खूब बड़ा आंसर G10 न्यू वैल्यू बाहर करी पकई आपण जी जी माइनस जी म्यू म्यू माइनस ए केसे प्रकार माइनस पे हम कौन ଯେତେବେଳେ ଥୀଟା ଥିଲା ଭଲ ବୁଝ ବୁଝିପାରିଲ ଥୀଟା ଯେତେବେଳେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ବଡି ମୁଭ କରୁଥିଲା ବଟ ଆକ୍ସିଲରେସନ ହଉନଥିଲା ମନେ ବୁଝ ଯଦି ଆକ୍ସିଲରେସନ ହଉନଥିଲା ଫୋର୍ସ ହବନି फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन और कोई बुझा तो बॉडी मूव करियो अरे तो वेलोसिटी चेंज हो से तो एक्सीलरेशन हो तो वेलोसिटी चेंज हो कांस्टेंट हे गला तो बॉडी एक्सीलरेशन करू ये एक्सीलरेशन करू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ये एक्सीलरेशन नहीं फोर्स अछि तो ये फोर्स नहीं वर्क कर बुझिया किंतु जत्ते बेले आउ 15 डिग्री इंक्रीज कर देबी जत्ते बेले एक्सीलरेशन हैला एक्सीलरेशन केते पछाई तमाने जेते बेले थीटा 30 डिग्री कर देली सेते बेले एक्सीलरेशन केते होई क्वेश्चन पछाई या ताओ बुझि पालो 15 डिग्री स्लाइडिंग होतला काहे होता बोली बुझि पालो काहे की बॉडी विल स्लाइड डाउन बट नो एक्सीलरेशन हो इलो ए भाई बुझि पाछु ताले आ कोन दिस केते ଏବେ ଦାଦା ରହୁଛି କହିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସଟା କହିବା ପାଇଁ ଦାଦା ରହୁଛି ହେଲା ସୋ ମତେ ତ ନିୟମ ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ପଢିଛେ ନ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ tan θ ତମେ ପଢିଛି ମାନେ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ସନ tan θ କେତେ 1 କେତେ दा शेष कोन एक्सीलरेशन को इंक्लाइन डाउन एक्सीलरेशन फॉर्मूला कोन g sin थीटा g कहते sin कहते क्यों कहते cos 30 बहुत बढ़िया sin 30 कहते 1 by cos 30 कहते कटिगला सी विषय 0 बाहरला फॉर्मूला ठीक पकई तो फॉर्मूला बोल पकई डी हो गई सेते बात आप करो बार बार शीघ्र देखो फुल बार शीघ्र पढ़ो
Yeah. Crowd question. देखो an motor vehicle uh, moves with a speed of moves in an inclined plane moves in an inclined plane moves in an inclined plane incline incline an angle 30 degree with a speed of 36 kilometers per hour. है 36 kilometers per hour. After moving a certain height, the engine will suddenly off. Engine संगे संगे देखलो मतलब कि suddenly off. The coefficient of friction is 0.1. The coefficient of friction is 0.1. Coefficient of friction is 0.1. Calculate the distance covered by the automobile motor vehicle charge. Distance covered benar. Sudah tahu, taruh.
और क्वेश्चन देइछि आको बुझिलो त आंसर करियो ना तो ना बुझाओ अपन आंसर ओनी ना क्वेश्चन कर देला तो ऑटोमोबाइल ऊपर उठ जाउछ इंक्लाइन ट्रेन पिता ऑटोमोबाइल गाड़ी के ऊपर उठ जाउछ ला कितना स्पीड रे जाउछि yes u is 36 kilometer per hour 36 kilometer 5 by 18 meter per second yes or no to 10 meters per second this velocity the car will move upward okay so when it is moving from this point to this point this point to this point suddenly cover it is engine off angle the distance cover much okay फाइनल वेलोसिटी केते हेगला कार इंजन नी जॉब काटा कोन उड़ीगो कोन उड़ीगो पवन रे कोन हां हां तो पहला काटा वाला उड़ो बुझियो ऐसे बुझला भाई न्यू देली ही देली एस ला गाड़ी में चाउची तो ये दक्षा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s तो ए पाइलो से पकेतरे बाहर जीवो ताले ए केन पाइली ऊपर भी जाउची अपवर्ड जे अपन ए ର फॉर्मूला करबो g करबो mu cos थीटा minus sin g stand mu is what cos how much huh minus sin 30 degree sorry 10 टा गुण दउची तार रही की असुविधा होची ताइला ए के cos 30 केते चलो चलो एंडा गुण देलिया क्लास में हां वाले कहते हैं 1.732 छाड़ो 1.732 ये कितना हो रहे हैं 80 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर बुझ पाइला बुझलो तो केते डिस्टेंस ऊपर को जीवो फिरले स्क्वायर माइनस स्क्वायर करते हैं 0 स्क्वायर यूज करते हैं ये कहते हैं इक्वेशन ध्यान दो minus 100 minus 2 into 4.13 into s minus s कटी गला 50 by 4.13 equal to s divide करो तो इसी के ना अच्छा हो जाए 413 और जति वाला 70 की मीटर जति की डिस्टेंस में ऊपर तो बोलो बंदा कारगिल बनो सर एपर को क्लास अछि उड़िया तो भारी बढ़िया
Unitary, secondary 89 gross capital of the country. Secondary, zero point 0.1 that's what 1 by the rate. 0 10 का बाहर देना 0.1 डाउन करते तो 1 by 10 बाहर देना तो ले 1 1 is 9 और सेट वाले करते रूट डिवाइड 10 का सेट मीट लगाई साइन वाले करते पर बाय 2 that's